Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Week. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Once again, I would like to welcome you all to the learning experience with iExamB and embrace this experience. For this, don't forget to subscribe to our YouTube channel, specially for law, that is Legal B. On this YouTube channel, you will be keep on getting all content and strategic preparation related videos for various law examinations. If you have any queries, you can reach out to us by writing us an email on hello@iexamb.com. You can also call us on the number 920-5524-028 and आप हमारे वेबसाइट that is www.iexamb.com को भी विजिट कर सकते हैं and there you can check out all the courses, activate the demos of various courses. You can also download our app. iExamB's app will provide you a very easy and handy access to all the features in which there are 2400 plus earned mock tests. So I would suggest all of you to visit all these exclusive features by iExamB. In today's video, we are going to talk about various opportunities that are available after law. But exactly, I won't be telling you about the opportunities, but I will be telling you about how you have to prepare for all these opportunities and what will be the exact way that you can carve out for preparing. That is what is we are having a course, Mega B Legal course, and उससे related मैं कुछ important topics आपको बताने वाली हूँ इस video series में जो मैं आज start करने वाली हूँ. That is, you will be carving out some important topics like this, जैसे कि constitutional law एक common area है जो सारे exams में आता है. This is not an exhaustive list which I have given here. SEBI, RBI, IBPS, Central Bank. अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज और भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो आप लॉ डिसिप्लिन में केटर कर सकते हैं एंड उसमें कुछ कॉमन लॉज हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है एंड द बेस्ट पार्ट इज एट द सेम टाइम यू कैन प्रिपेयर फॉर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. दैट्स व्हाई iExamB हैज ब्रॉट दिस मेगा बी कंसेप्ट. उसी मेगा बी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है by this particular topic, fundamental rights, which is inevitable to be dealt with under constitutional law. These are some of the golden topics for your examinations. Wherever you have law subjects, these are the golden topics from which definitely you will be getting questions, though in different formats, in different exams, but the ultimate concept is going to remain the same. तो ये सारे वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ कुछ गोल्डन टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड कुछ questions जो कि sample questions हो सकते हैं because these have been picked from the previous year papers of different exams. So that's why don't forget to subscribe to Legal B and watch all the videos of the series which I am going to get for you. This is the first video that I have taken up today and the topic is fundamental rights. मेगा बी लीगल ऑनलाइन कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. ये मैंने आपके साथ डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हुए हैं. दिस इज हाउ द लीगल ऑनलाइन कोर्स फॉर मेगा बी कंसेप्ट वी हैव ब्रॉट, इन विच वी हैव ब्रॉट टुगेदर all the areas. First, you can see these are the common acts for all the exam. फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने आपको कहा, ऐसे हमने कुछ कॉमन एरियाज निकाले हैं, उसका कंटेंट दिया है. After that, you will find exam specific contents. Securities law, that is for SEBI, it is very important, but it is a SEBI specific area. So that you will find over here. Laws for banking and insurance exams you will find over here. Now there are some vacancies which come out for the insurance bodies which are coming for the banking sector. So वो सारा आपको एक head के अंदर मिल जाता है. Laws for the public sector undertakings. There are various PSUs for which we are giving courses for preparation. There are so many opportunities coming for law officers in various bodies. So all these things you can find in this one umbrella course. And this is really beneficial if suppose you want to make your career in either of the opportunity as a law officer or a government job or something like that you want to do after law. You are not sure that exactly what you want to do, but you have a basic guideline that you want to join this sector, be it SEBI, be it IBPS. If you are preparing simultaneously, many students are there who do this. हमने mentoring करते वक्त
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात भी की है. While teaching also we have interacted with many students who are following this approach. They want to prepare for many exams at one time. So for them, Mega B Legal is the best choice. You can find a lot of course content. Even interview preparation will be inclusive in that. Live classes, tests, all these things will be there under one heading, as you can see in this particular snapshot. And not only law. This is also one thing which you have to see. Cons, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सारी चीज़ें जो इन एग्जाम्स में कॉमनली पाई जाती हैं, that also we are going to give you. So this will be very comprehensive course for your preparation, not only sticking to legal but also to these areas. So it was mandatory for me to share this with you over here. It should not happen that you are not aware about this opportunity. You can avail this and you can face your preparation. Starting with fundamental rights, very important part of the Constitution of India, part 3. अगर Constitution से कोई question पूछा जाना है तो वो definitely fundamental rights से पूछा जाता ही है. Fundamental rights should be thoroughly prepared. It is enshrined in part 3 of the Constitution, and here I would suggest कि आप article numbers को भी ध्यान में रखें. It starts from 12 and not from 14. ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है. Part 3 is also known as the Magna Carta of India. अब इसे Magna Carta क्यों कहा जाता है? Magna Carta is the first document in the world in England around 1215 that was an initiative where first time recognition was given to the fundamental rights of the people. इसलिए इंडिया के लिए जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है. So Magna Carta is the Charter of Rights that was issued by King John of England in 1215. That was the first written document relating to fundamental rights. Source of fundamental rights in India is the Bill of Rights of American Constitution. Bill of Rights was derived later on, and that came after this 1215 was the first document. That's why Magna Carta काफ़ी important हो जाता है. लेकिन अगर हम यूएस में डेवलपमेंट्स की बात करें तो बिल ऑफ राइट्स वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव ओवर देयर. अगर हम इंडिया में देखें तो इट इज पार्ट 3, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. These are the different categories of fundamental rights. This I want everybody to be aware of. Many times what happens, students are not aware of the categorization of fundamental rights. So I have to share this with you. People think that 14 is the only article which deals with equality. Or they think at the most 14, 15 and 16. 14 से लेके 18 तक सारे articles right to equality के बारे में बात करते हैं. Then is the freedom, 19, 20, 21, 22. All these come under one head, that is right to freedom. Right against exploitation is there. Freedom of religion is covered under 25 to 28. Cultural and educational rights are there, 29 to 30. And then we have right to constitutional remedies, that is Article 32, which is a fundamental right and gives you a way to directly approach the Supreme Court for violation of your fundamental rights. Now, why fundamental rights are so important and why people are having so much faith and believe in these fundamental rights in the democracy of India? Just because of the justifiability that they carry. अगर हम DPSP और फंडामेंटल राइट्स के कोरिलेशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा रिलायबल हैं क्योंकि वो जस्टिफाइबल हैं. If there is any law that is violating fundamental rights, it will become void. Article 13 gives protection to all the fundamental rights, and if a law is passed that is inconsistent with or it is derogating any of the fundamental rights, it shall become void. Judicial review का power दिया हुआ है Article 13 में to all the courts, and the courts that is chiefly Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226. In Keshwanand Bharati case, which is very landmark one, it was held that a constitutional amendment can be challenged if it violates a fundamental right. Now here, if we are talking about fundamental rights, it is inevitable for us to talk about writs as well. आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, you have to keep your mind open.
Don't be very narrow in your approach towards your studies. If you are sticking just to one area, you cannot prepare comprehensively. When the examiners are putting questions in your exams, they will try to correlate and connect it with different areas and the basics. अगर हम रिट की बात करें तो रिट फंडामेंटल राइट से काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली रिलेट होता है. तो अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, उसकी जस्टिफाइबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपको रिट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. Writ is a legal order itself that is given by a court of law. Supreme Court and High Courts are only having the power to do this, to issue writs. This also we should be clear to us. What other types of writs? All 5 types of writs and their exclusive features. These should be clear to you. These are the basics of law. ये आप स्किप नहीं कर सकते और आपको किसी को स्पेसिफिकली सिलेबस में बताने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपने एलएलबी कंप्लीट किया है तो ये बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. व्हाट इज द एक्सक्लूसिव फीचर फॉर हेबियस कॉर्पस? फॉर एग्जाम्पल, वी शुड बी वेरी विजिलेंट एंड ये हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि हेबियस कॉर्पस की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग इज टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर द कोर्ट इफ सपोज दैट पर्सन इज मिसिंग. Such kind of things are there. Mandamus again is a very important writ. Public authorities को mandamus दिया जाता है. This is what special things about each type of writ you should be very clear with. Now let us see some questions. ये सारे जो questions हैं ये मैंने previous year papers से लिए हुए हैं. कुछ memory based papers हम लोग create करते हैं कुछ exams के लिए जहाँ पर paper out नहीं होता. For example CB. So we create memory based papers basing on the questions that we have received from different students, and everywhere we research and we create it in the form of a memory based paper. So ये आपके लिए काफ़ी हद तक एक accurate analysis हो सकता है टॉपिक और उसके साथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप इस तरीके से इन वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर रहेगी. राइट टू एजुकेशन इज अ fundamental right as per Article 21A, fundamental right as per Article 21, constitutional right, fundamental duty only, both C and D, that is constitutional right and a fundamental duty. So इस तरीके से right to education के बारे में आपको पूछा गया है. कहीं आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं, कहीं आपको दिया है ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल, कहीं दिया है ओनली फंडामेंटल ड्यूटी, कहीं बोथ. अब ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जो अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है एंड इसके जो प्रोविजंस है ये हर जगह आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट एंड कोर एरियाज में. फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है. सो डेफिनेटली एग्जामिनर को इस तरीके के प्रोविजंस अट्रैक्ट करेंगे एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सच काइंड ऑफ एरियाज यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ. फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 21A, as per 86th amendment it was added. This also you should remember. Constitution of India is going to provide free and compulsory education for all the children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right. और यहाँ पर सिर्फ ओनली देने की वजह से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. मे बी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर ओनली दिया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. सो द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी A only. Equal pay for equal work is provided under which part of the Constitution of India? This is also a very famous area. Labor laws में स्पेशली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? आप ऐसा मत सोचिए कि आपको आर्टिकल बेस्ड या ऐसे डायरेक्ट पार्ट नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते. इट इज़ नॉट सो. लैंडमार्क एरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, दे कैन आस्क यू. सो पार्ट 4 talks about it. Part 3 is fundamental rights. What is part 4? That is talking about directive principles for state policy, and that we have this principle under Article 39, equal pay for equal work, be it men or women. This kind of discrimination we cannot do. State shall not confer a title on any citizen or a non-citizen except when it is academic or military, when it is only academic, when it is only military, when it is based on a nomination, when it is based on sponsorship.
अब ये पहले आपको समझना होगा कौन से आर्टिकल से या कौन से प्रोविजन से पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इज नथिंग बट दिस इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ही ईजी होने के बावजूद कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड वी फोकस मच ऑन 14, 15, 16 भी निग्लेक्ट 17, 18। 17 तो काफ़ी सिंपल है। 18 में एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन इज ओनली एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उसमें आप देखोगे क्लियरली फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। नाउ यू मे गेट कंफ्यूजन दैट फॉरेन स्टेट से अगर टाइटल एक्सेप्ट किया जाता है तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है स्टेट शैल नॉट कॉन्फर अ टाइटल। तो ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लॉज से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार आपको कंसेप्ट पता होता है, प्रोविजन भी पढ़ा होता है, पता होता है, लेकिन क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ने की वजह से यू गो रॉन्ग। दिस शुड नॉट हैपन विद यू। ऑल दीज 3 क्लॉजेस रीड क्लियरली। चाहो तो आप एक जगह पे लिख लो साइड में एक्सेप्शंस क्या हैं, टोटल एक्सेप्शंस कितने हैं, विच इज एप्लीकेबल टू व्हाट, बी क्लियर विद दैट। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law is provided under which article of the Indian Constitution। You may think कि मैम ये तो बहुत ही easy question हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत बार simple and direct questions भी आते हैं, स्पेशली Constitution of India से कई बार ऐसे simple and direct questions पूछे जाते हैं। I have seen in many competitive exams this happens, so you check that। एंड हम ज़्यादा डिटेल्ड एक्सपेक्ट करते हैं, उस चक्कर में हम बेसिक पढ़ना भूल जाते हैं बहुत बार। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड बैलेंस योर स्टडीज। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी इजी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, but sometimes read it carefully. Sometimes they may miss a word over here and your answer may go wrong. Carefully read the question. Which of the statement is correct relating to Article 32 of the Constitution of India? Fundamental right, right to constitutional remedies. Individuals have the right to approach Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. All are correct, A, B and C. Only 2 are correct, B and C. Now you may find here कि सारे options तो काफ़ी नियर लग रहे हैं, काफ़ी हद तक सेम है। अगर इंडिविजुअल भी देखो तो भी गलत नहीं है। It may happen questions may have very near options. It happens. You have to choose the most appropriate answer and you have to guess that from the question, how it is framed and what the examiner is expecting. ये आपको देखकर आंसर करना होता है। So the answer over here is D, all A, B and C. अगर आप आर्टिकल 32 देखोगे, it guarantees right to constitutional remedies, ये वाला तो करेक्ट है ही। This provision empowers the individuals to approach the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. This is also correct. Article 32 itself is a fundamental right. This article is coming under part 3. It is itself a fundamental right. ये भी correct. So ये तीनों options यहाँ पे correct है। So this was all that I had to discuss from the topic of fundamental rights. अगर आपके कोई भी queries हैं, do reach out to us. आप इस वीडियो की comment section में भी लिख सकते हैं। Don't forget to check out the details about the Mega B Legal Online course. All in one course है, जैसे मैंने आपको बताया है इसके बारे में। Don't forget to check it out. You can download our brochure as well. In the link of this video, I have attached that. वो भी आप check कर सकते हैं। And कोई भी queries है, you can reach out to us. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and prepare 50% faster with us at iExamWeek.